On behalf of Sri Mata Vaishno Devi University and Indira Gandhi for the Arts, I would like to extend my warm welcome to all the speakers of today's webinar on Jewels of Jammu, School of Nature Painting. My special thanks goes to Professor Richa Kamboj, Dr. Sangeeta Sharma, Dr. Monica Baggaji. We are also joined online by modern artist Sri Kishore Shankar Chawla ji, traditional artist Sri Anshu Mohan Dogra ji, and student artist Ms. Seema Rawat ji. And also we are joined by faculty, students, scholars at Sri Mata Vaishno Devi School. It is indeed a great pleasure to be amongst the scholars of Basoli School of Nature Paintings. Today we are fortunate to listen to the scholars about the school which holds an important place in the field of artistic creativity and artistic expressions. I would like to welcome Dr. Richa Kamboj as a celebrated artist, art historian, and critic for the keynote address. Dr. Kamboj is head of department in drawing and painting and executive board member of Lil Kala Academy, New Delhi, a premier institution in the field of arts. She is author of many books, which include Wooden Temples of Uttarakhand, a study of art and architecture, Woodworks of Garhwal Himalayas. I request Professor Richa Kamboj to deliver the keynote address. Madam, please. Thank you, sir. Respected Dr. Viren Bangruji, who is Director, Regional Center, Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi. Respected Shri Samantha Sharmaji, who is HOD, School of Philosophy and Culture, and also Faculty Coordinator at Shri Mata Vaishno Devi University. Respected Dr. Sangeeta Sharmaji, she is Assistant Director, Department of Archives, Archaeological Museum at Jammu. And Dr. Monica K. Baggaji, who is art historian, an artist from Chandigarh. Eminent artist Shri Kishore Shankarji, and yes, traditional artist and very good scholar, respected Shri Anshu Mohanji, and a young scholar who has joined us today, Ms. Suman Rawatji, and eminent academicians, scholars who have joined us today in this webinar on Jewels of Jammu, School of Basoli Miniature Painting, which is being organized by Shri Mata Vaishno Devi University and Regional Center, Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi. My Sadar Namaste to all of you. And I would like to extend my heartfelt gratitude and thanks to respected Dr. Viren Bangruji and respected Dr. Samantha Sharmaji for inviting me on this in this very prestigious webinar and giving me an opportunity to join all of you on this occasion. And special thanks to Dr. Viren Bangru, who is a very renowned museologist. He is also an historian, and he has a commendable contribution in the field of art, culture. And nowadays, he is making a significant contribution in the field of art and for the development of art and culture of Jammu and Kashmir. So once again, I thank both of you. And now I would like to start with my presentation. As you know that my presentation is titled as Retrospection on the Basoli Atelier of Miniature Painting. Now the overview of Pahari miniature painting of India, it presents a very rich, colorful, artistic and culturally affluent scenario in which Basoli School of Painting has a distinct significance, as it won't be exaggeration to call it an indigenous style of miniature painting in the hill states. Basoli was founded by Bhupat Pal in 1635 Common Era. Basoli in ancient times was known as Vishwasthali. The first dated examples of Basoli miniature painting, that is Chitras Manjari, are from the reign of Raja Kripal Pal, which was completed after his death in 1694.
Though Basoli was the main center of these miniature paintings, but Basoli style with local variation was in vogue in Mankot, Chamba, Nurpur, Kullu, Mandi, Bilaspur, and Jasrota. Ras Manjari was a very popular text in the Pahadi states in the 17th and 18th centuries. For Raja Kripal Pal, Bhupat Pal's Ras Manjari was painted, which was completed after his death in 1694 Common Era. There are three series of Ras Manjari paintings. One comprising of 135 paintings is divided between the Dogra Art Gallery Jammu, the Museum of Fine Arts Boston, the Victoria and Albert Museum London, the Central Museum Lahore, the Chandigarh Museum. The main features of this series are horizontal format, red borders with inscriptions on top and serial number on left in Takri. The back of the folios, they bear Sanskrit verses in Devanagari, and this dates back to circa 1680 Common Era. The Ras Manjari series in the collection of Bharat Kala Bhavan, Banaras, and this is the second set of miniature paintings, Ras Manjari miniature paintings, which is in collection of Bharat Kala Bhavan, Banaras, and National Museum, New Delhi. This was painted by artist Devidas, as mentioned in the colophon, which dates to 1695 Common Era. Now there is another or third set of Ras Manjari miniature paintings, which was executed 20 years later. And this is in collection of the British Museum, London, and Victoria and Albert Museum, London, and Kastuba Bhai Lal Bhai collection, Ahmedabad. Now, besides Ras Manjari series, there we get folios from Geet Govind also, which date to 1730-35 Common Era. And there are Ramayana drawings, which date to 1816 Common Era, which are in Bharat Kala Bhavan, BHU, and these were drawn by Rancha. And in between, we get individual or separate painted miniatures. Basoli style, since its beginning till the end of the reign of Raja Amritpal, was purely indigenous. After the death of Amritpal, power of Basoli state started declining towards second half of the 18th century. The style which emerged at this time is referred as Guler Kangra. The Ramayana drawings are done in this style. This folio from Ras Manjari it depicts Agyat Yavan Mugdha, and Basoli miniatures are always dominated by a very brilliant patterns or stripes of ochre, yellow, or brown colors. As we see here, the scene is set in an open yellow ochre landscape with a bed chamber on right side. And the Naika here and her Saki, they stand on moss green area, though reduced to a stripe followed by a lotus. The Naika, after her bath, is drawing herself, as mentions the inscription, wiping off the flower which she thinks has stuck to her ear. Variety of trees like mangoes, ashok, weeping willow, with stylized decorative foliage is a characteristic of Basoli school of miniature paintings, especially of the first set of Ras Manjari. This is the depiction of Jad or Stufer, a folio from Ras Manjari, and Jadata is one of the 9 conditions mentioned by Bhanudat in Ras Manjari, which results due to non-fulfillment of desire. The folio is sumptuously embellished. The gestures of the Sakhi, Nayak, and the Naika, they are quite expressive. The anxious Naika conveys to the Nayak that the Naika has fallen unconscious and can be brought back to consciousness if she hears his name.
The lifeless limbs of the Naika, stillness of her pupil, it manifests her unconscious state effectively. The otherwise two-dimensional space is attributed depth by the arrangement of color contrast in background and two dark entrances doors, which is an indigenous method to create a sense of depth. Now this is the depiction of Parkhya Gupta. Here we witness, this is a depiction of a lady who is excusing her love bites as cat scratches. Here we witness that the composition has become more complex, which includes architectural settings in vibrant yellow and landscape with red background infused with variety of stylized trees, lotus ponds, and lively fauna. Ras Manjari is a love lyric, and the colors often used in the background, that is red, yellow, orange, have symbolic significance. This is again a folio from Ras Manjari in the collection of Victorian Albert Museum, and we can see use of very vibrant palette, red, chrome yellow, orange, blue, green. The Nayak wears a long garland and wears a jewel-studded crown, which is adorned with 3 lotus birds, a distinct feature of miniature paintings, of these miniature paintings, which belong to Basoli Atelier. Another folio from Ras Manjari, it depicts Kriya Vigda Naika. That is a Naika who is clever in her deeds. This is the depiction of the Naika who cleverly throws the axe into water, as a spouse had forbidden her to cut the bare tree, which is very lively depicted. And inlay work in the architectural components, lattice work in the door is noteworthy. Jewelry assumes a distinct feature, which is depicted with raised drops of white paint to represent pearls and use of particles of green beetle wings to represent emeralds. Beetle is an insect of green color which shines at night. The use of white raised dots to represent pearls with application of beetle wings fragments to represent emerald are the typical feature of Basoli style. Now this is the depiction of Roop Garvita Naika, who is proud of her beauty. And the plinth here ending in a grotesque animal head is noteworthy. This is Lakshita Parkhya Naika whose love has been disclosed. Here we witness variation in the style as compared with the earlier discussed folios. Penchant for simplification is typical here. Less complexity in composing forms, whether it's architecture, treatment of foliage, or the background. The variation in style must have been due to a number of artists working in the Basoli Atelier. Raja Kripal Pal, who reigned from 1678 to 94, is credited to have established Basoli Atelier. Devidas was a well-known artist of his period, whose name is already mentioned in the colophon of Ras Manjari, dated to 1695. He belonged to a carpet painters family of Nurpur. This is Raga Kumbha. It is an illustration from Ragmala series, and this was executed towards the end of 17th century. We must remember that the second set of Ras Manjari, it tends towards simplification, less variety of trees, figures with fleshy faces and bulging eyes. Bulging eyes is a very common feature of Basoli miniature paintings. Raga Kumbha here
belonging to Ragmala series is marked by greater simplicity. Difference in the costume of the male as compared to the dhoti of the Nayaks of Rasamanjari is noteworthy. Here, the bearded male, he wears a gherdar kurta, tight-fitting pajama, unlike the females of Rasamanjari who wear double-colored skirts or ghagra. Here, the girl pouring out water from the well wears a single-colored skirt and a dupatta. The aerial view of the white well, which is set against brilliant orange background with clouded narrow stripe of sky and a simplified tree, are the only minimized forms used by the artist for the visual narration of the episode. Now, this is the depiction of Abhilasha, that is desire. The folio from Rasamanjari, it depicts Nayak in despair. He's conversing with his companion who is consoling him. Vibrant palette is a striking feature of this school of painting. Treatment of the space is two-dimensional. In between the narrow stripes of clouded sky and green grass, the flat orange background against which Nayak and his companion project out due to contrasting colors used in the figures, which are slender and slightly taller than compared to those folios, to other folios of Rasamanjari series. This is Vipralamb, or depiction of separation. Lotus-eyed Naika is seated inside her bedchamber. Her Sakhi is standing out and conveying to the Nayak the desperation of the Naika to see his footpath. We can see winged-like motive which she holds in her hands. So says the Sakhi that her heart is like the growing wings in the form of lotus leaves as she wishes to see his moon-like face. Whether it is architecture or background, in Basoli miniatures, patterns of color enhance the richness of composition. Gradual ripening of style results in increasingly decorative elements. White raised dots to represent pearls in ornaments, use of gold, and beetle wing fragments applied in jewelry. They attribute shine to the ornaments. Architectural components comprising of turret, that is small towers, panel doors, plinth, columns, they are all marked by decorative quality. Faces are slightly heavy and they have bulging eyes. This is Radha and her companion. They are approaching Krishna. This folio from Gita Govind series, it dates to circa 1730-35 Common Era in Victoria and Albert Museum. Now, refinement in the treatment of figures, visage, eyes, and costume is quite evident. This is Krishna dealing with cowherd maidens, a folio from Gita Govind in the National Museum. Refinement and simplification is again a prominent feature of Gita Govind miniatures. Besides, moderate depiction of pearl jewelry, gold jewelry is also conspicuous. Besides Rasamanjari and Gita Govind, we get individual miniatures of Hindu gods from Basoli. This is Lord Rama in the collection of National Museum. He's seated on a lotus with his bow and arrow against the red background and a pond in front with lotus leaves. The later phase in Basoli miniature painting is marked by remarkable simplification. Division of the space remains the same. Narrow clouded skyline, narrow stretch of pond, and flat, broad, vibrant central stripe in which the main form is placed or scene takes place. This is the depiction of Holy Family, again in National Museum.
which consist of Shiva, Parvati, with their sons Ganesha and six-headed Kartikeya. Serenity and sublime beauty, it pervades the entire scene. Now, Tantric Devi series was also painted in 1660-70s at Basoli. It proves that the Devi cult was quite popular in the region. Stylistically, it is analogous to Ras Manjari series. This is the depiction of Bhadrakali. She's being adorned by the gods, and she's flanked by Kali, Chamunda, Swaha, the consort of Agni, and is adorned by Shiva, offering flowers on her feet. All are very heavily bejeweled with pearl ornaments, and Bhadrakali wearing a crown, which is similar to the one worn by the Nayaks of Ras Manjari. Affinity in the style of the two series must be due to their being executed by the same artist. This is another depiction of Bhadrakali in Metropolitan Museum. And besides Ras Manjari, Geet Govind, and other independent the deities which are painted, Basoli has also yielded some portraits of the rulers. This probably is the portrait of Raja Kripal Pal, which was painted towards the end of the 17th century. Though treatment of the background and the intricate design of the carpet is same as seen in the other miniatures, yet considerable facsimile is observed in the portrayal of Raja's face. So, thus retrospection of Basoli atelier of miniature paintings, it betrays that Basoli was a style of painting deeply rooted in the native soils of the country, with the fragrance of the folk and traditional elements, an Indian aesthetic aura of par excellence. Thank you. Thank you. Thank you very much, Professor Richa Kamboj, for your remarkable speech on retrospection on Basoli atelier of miniature paintings. You gave an interesting and scholarly insights on the pattern of the indigenous school, stylistic features, treatment of space, artistic expression of Ras Manjari, classical Geet Govinda, Ragmala, and other paintings. Thank you very much. Thank you. Next, I would like to invite Dr. Sangeeta Sharma ji. Dr. Sangeeta Sharma ji. Dr. Sangeeta ji is Sanskrit scholar and expert in deciphering the old scripts like Takri and Sharda. अभी जो है डॉक्टर ऋचा जी ने उल्लेख किया जो पेंटिंग्स हैं बसोली की पेंटिंग्स है वहां पर जो है टाकरी में भी वहां पर लिखा गया है पेंटिंग्स के बारे में तो जो है डॉक्टर संगीता जी का शोध है टाकरी स्क्रिप्ट में और शारदा में भी इनका शोध रहा है और इन्होंने जो है जो प्राचीन जो है पांडुलिपियां हैं जो इस क्षेत्र में है जम्मू क्षेत्र में कश्मीर के क्षेत्र में जो शारदा और टाकरी में हमें उपलब्ध है यहाँ पर उस पर इनका गहन अध्ययन है और इनके जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो देश विदेश के कई पत्रिकाओं में जो है रिसर्च पत्रिकाओं में छप चुके हैं प्रेजेंटली जो है वो जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डोगरा आर्ट म्यूजियम जिसमें जो है विश्व विख्यात जो बसोली पेंटिंग है वो यहाँ पर सुरक्षित है और आप सब देख सकते हैं उसको मैं डॉक्टर संगीता जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें डॉक्टर संगीता शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद श्री वीरेंद्र वांगरू जी धन्यवाद करती हूँ मैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का और मेरे जो साथी यहाँ पर हैं सब साथियों को मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ कुछ बोलने का डोगरा कला संग्रहालय में कार्यरत होने के कारण मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे रस मंजरी चित्रकला को समीप से देखने का बार बार मौका मिला आप जितनी बार इन चित्रों को देखेंगे मैडम ने बड़े अच्छे से व्याख्यान दिया ये मैडम डॉक्टर ऋचा मैम ने कि हम जितनी बार भी इन चित्रों को देखेंगे बार बार देखने का मन करेगा मन हमारा नहीं भरता ऐसा मेरा मानना है कवि भानुदत्त की रसमंजरी को बहुत पहले से पढ़ चुकी थी संस्कृत की स्टूडेंट रही हूँ और इन पर आधारित चित्रावली को देखने का
देखने के मेरे मन में बड़ी ज्यादा जिज्ञासा थी कि मैं इन चित्रावली को देखूं, और ये जिज्ञासा इन चित्रों को देखने कर ही शांत हुई। इन चित्रों का बहुत बड़ा भंडार जो है वो हमारे डोगरा कला संग्रहालय में इस वक्त है। बसोली के शाही वैद्यों के वंशज श्री कुंजलाल पाधा जी ने के संकलन में ये चित्र थे। तो 1961 में उन्होंने तब जम्मू कश्मीर के राज्य के प्रधानमंत्री श्री GN बख्शी जी को ये सारी चित्रावली उन्होंने भेंट की, जो बाद में उन्होंने डोगरा आर्ट म्यूजियम को संरक्षण के लिए दे दी। संग्रहालय के इन महान चित्रों को बड़ी अच्छी तरह से हमने सहेज कर रखा हुआ है। इन चित्रों को देखकर जो थोड़ा बहुत मैं उनके बारे में जान पाई हूँ, मैं आपके साथ अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। बसोली चित्रकला संसार भर की अग्रणी चित्रकलाओं में अपना विशेष स्थान रखती है। 16वीं शताब्दी भारत के चित्रकाल के लिए एक संक्रांति काल था। मुगल काल के व्यवधान के बावजूद भारतीय कला के विकास में ये काल चित्रकला का ऐसा पड़ाव रहा है जिसमें बसोली चित्रकला ने साहित्य की भाषा और संगीत के स्वर को बखूबी समझा। सूक्ष्म और लयात्मक रेखाओं और अद्भुत रंग विधान द्वारा नायक नायिका के कोमल मनोभावों की अत्यंत लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। बसोली चित्रकला संपूर्ण विश्व की चित्रकला के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि रंग और रेखाओं की सुनियोजन और प्रतिमाओं की ऐसी निकटता, ऐसी एकता तथा शारीरिक और आध्यात्मिक मूल्यों का ऐसा सुंदर संयोग अन्यत्र कहीं भी नहीं नजर आता। कृष्ण की लीला और राधा तथा अन्य गोपियों का अनुराग सभी इन चित्रों में बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त हुआ है। ऐसे प्रेम का इतना निर्मल, इतना स्वच्छ, इतना उज्जवल और इतना आकर्षक रूप कहीं भी दिखाई नहीं देता। इन चित्रों का अंकन अपने आप में इतना घटित है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं लगता। विभिन्न विद्वानों ने रस की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जैसे रस्यते इति रसः, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। परंतु रस का अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसी व्यापकता के दृष्टिगत कहा जा सकता है कि जो कुछ भी हृदय में आनंद का संचार करे वह रस होता है। चित्रकला के द्वारा भी रस का संचार होता है। चित्रों में वर्णित भावों को जितनी भी गहराई से हृदयंगम किया जाए, रस का संचार उतना ही अधिक होता है। बसोली की रसमंजरी चित्रकला की भी यही विशेषता है। इस पर आधारित चित्रकला में नायक नायिका के विशुद्ध प्रेमाभिव्यक्ति को देखकर हृदय में रस का संचार होता है। अगर नायक कृष्ण हो और नायिका राधा, तो वो ही रस का संचार आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। अतः रस तथा मंजरी के योग से बना रसमंजरी शब्द विशुद्ध संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है रसों का समूह। नायक नायिका भेद पर आधारित भानुदत्त की रसमंजरी 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में पहाड़ी राज्यों के शासकों की एक प्रिय पुस्तक थी। बसोली के राजा कृपाल पाल एक महान विद्वान तथा कला प्रेमी थे, क्योंकि श्री कृष्ण इनके आराध्य एवं श्रद्धेय थे। अतः ऐसा माना जाता है कि राजा कृपाल पाल ने धार्मिक भावना के वशीभूत होकर इस पुस्तक पर विलक्षण चित्रावली का चित्रण करवाया। रस मंजरी के हर चित्र के पीछे भानुदत्त द्वारा रचित श्लोक का वर्णन है। मैं अक्सर देखती हूँ कि हमारे कई बच्चे आजकल जो रस मंजरी ये पेंटिंग्स बनाने जाते हैं, तो कोई भी पेंटिंग बनाएंगे, बसोली का चित्रण करेंगे, मैडम आप भी सुन रहे हैं, तो उसमें वो क्या करेंगे कि सीधे लिख देते हैं रसमंजरी, जबकि उनको ये पता नहीं होता कि रसमंजरी जो है वो भानुदत्त की एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस पुस्तक है। और फिर कलाकारों द्वारा राजाज्ञा से इन पर विलक्षण चित्रकारी करवाना भी ये युग जो है वो बसोली क्षेत्र का बहुत ही स्वर्णिम युग माना जाता है। संपूर्ण रसमंजरी में 138 पद्य हैं, जिसमें से इन पर आधारित 135 चित्र मिलते हैं। ये चित्र समतल आकार के हैं तथा लाल रंग की रेखा के अंदर हैं। चित्रों के विषय और श्रृंखला चिन्ह टाकरी लिपि में लिखे गए हैं। चित्रों में वास्तुकला का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। कक्ष की आंतरिक सज्जा में चित्रकार अद्भुत बुद्धि का परिचय देते हुए
दीवारों को पुष्पों से चित्रित किया गया है। देवताओं के चित्र तथा अन्य चित्र भी उकेरे गए हैं। दरवाजों की चौखटें, जालीदार खिड़कियां तथा स्तंभों की बनावट अत्यंत विलक्षण तथा चित्रों के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। किसी किसी चित्र में विभाजन करके 2 कक्षों को भी दिखाया गया है। कक्ष की बाह्य सज्जा भी दर्शाई गई है। स्वागत कक्ष में फलों की तश्तरियां एवं मदिरा के पात्र भी दिखाई देते हैं। चित्रकार ने प्रकृति का चित्रण करने में कोई भी प्रमाद नहीं किया है। चित्रों में वन का अपूर्व वैभव देखने को मिलता है। वृक्षों को पारंपरिक ढंग से दर्शाया जाना भी इस चित्रकला की विशेषता है। इन परंपरागत रूपों को अपनी कल्पना से और भी विस्तृत किया है। सर्वोपरि वृक्षों को ऊपरी डालियों को भिन्न भिन्न प्रकार से मोड़कर उनमें अद्भुत घुमाव पैदा करके उन्हें एक से एक आकर्षक रूप प्रदान किया है। उनमें बगुले जैसे पक्षी भी बीच बीच में बैठे हैं। कहीं कहीं पर घनी वृक्षावली, आम, सरो तथा अनार के वृक्षों का भी चित्रण किया गया है। फूलों से लदे वृक्ष एवं लताएं इन चित्रों के सौंदर्य में और भी वृद्धि करते हैं। रसमंजरी चित्रों में पुरुषों की अपेक्षा नारी का अंकन अधिक कलात्मक ढंग से हुआ है। प्रेम और श्रृंगार, संयोग और वियोग की स्थितियों और परिस्थितियों में उभरती उतरती नारी के सौंदर्य का अंकन रसमंजरी का ध्रुव बिंदु है। नारियों के अंकन में कलाकार का ध्यान नख, शिख और अंग प्रत्यंग पर बराबर बना रहा है। इन चित्रों को देखकर चित्रकार की सौंदर्य दृष्टि पर आश्चर्य होता है। स्त्रियों के सौंदर्य को उकेरने में चित्रकार की तुलिका ने विलक्षणता का परिचय दिया है। स्त्रियां अत्यंत कमनीय दर्शाई गई हैं। उन्नत नासिका और आंखें कमल की भांति हैं, जो उनकी मानसिक अवस्था का चित्रण करती हुई प्रतीत होती हैं। नायक नायिकाओं के प्रेम में जीवन का भरा पूरा अंकन इन चित्रों में देखने को मिलता है। इस प्रेम के केंद्र बिंदु राधा कृष्ण हैं, जो युग युगांतर से कोटि कोटि जनमन के आराध्य हैं। और फिर इस आराध्य का यहाँ देवोपम रूप देखने को मिलता है। वहाँ वह मानवीय रंगों में भी ऐसा रंगा है कि सहज ही साधारण जन उसमें निजी जीवन की निकटता देख सकता है। इस चित्रावली में आभूषणों से सजे हुए चित्र हैं। स्त्रियों एवं पुरुषों के मुकुट, गले के हार, कानों व कलाइयों से पहने जाने वाले आभूषण एक प्रकार के कीट के पंखों से बनाए जाते थे, जो इन चित्रों की सज्जा में वृद्धि करते हैं। रसमंजरी चित्रावली अपने लयात्मक रंगीन चित्रों में अपनी सूक्ष्मता के साथ बखूबी उभरी है। इस सूक्ष्मता को उभारने में चित्रकार की तुलिका और उसके अभ्यस्त हाथ खूब सक्षम थे। ये कूचियां गिलहरी के पूंछ के बालों से बनती थी। चित्रों को बनाने में एक बाल के ब्रश तक का भी उपयोग किया हुआ है। सूक्ष्मता में विस्तार देखने को मिलता है। इतनी सूक्ष्मता और नफासत उभर आई है कि उन्हें ठीक तरह से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की भी आवश्यकता कभी कभी प्रतीत होने लगती है। किसी भी कला के निर्माण में वातावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अवश्य रहता है। ये इन चित्रों को देखने से सहज ही प्रकट हो जाता है। बिना यथेष्ट वातावरण के किसी भी महान कलाकृति का जन्म नहीं हो सकता। बसोहली रसमंजरी के कुछ चित्रों को मैं बहुत ही ध्यान से देखकर उनका सूक्ष्म अवलोकन करके कुछ अपने शब्दों में कहने जा रही हूँ। परकीय वासक सज्जा नायिका दिखाई। यहाँ कवि भानुदत्त ने 2 पीढ़ियों का वर्णन किया है। अतः चित्रकार ने भी दृश्यों को 2 कक्षों में दिखलाया है। ये दोनों कक्ष सामने की ओर खुले बरामदे की भांति हैं, जो मंचीय दृश्य का आभास करा रहे हैं। एक और नायिका की सास निश्चिंत सोई हुई है। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो उसकी भंगिमा से बुढ़ापा प्रकट होता है। कक्ष के बीच में एक खंबे को रखकर चित्रकार ने दूसरे कक्ष को दृश्य से पृथक कर दिया है। इसमें विकल नायिका है, जो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में जग रही है। सबसे कमाल तो भारी पलकों वाली उसकी उनिंदी आंखों का है।
सेकंड। प्रोड़ा परकीया नायिका। इस चित्र में चित्रकार ने बाहर वृक्षों के बीच नायक नायिका और सखी को खड़ा किया है। तीनों की मनोदशा में बहुत बड़ा अंतर प्रतीत होता है। इस दशा को चित्रकार ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से प्रकट किया है। नायिका भावहीन दृष्टि से खड़ी है। दूसरी ओर नायक पेड़ों के झुरमुट में इन दोनों सखियों की बातें सुन रहा है। उसकी दृष्टि उसकी विकलता को सूचित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नायिका की किसी गहरी बात ने नायक को असंतुलित कर दिया है। इसी को उसकी भाव भंगिमा द्वारा भी दिखलाया गया है। दूसरी ओर नायिका में तटस्थता जैसा भाव भी है। नायक के उद्वेग को चित्रकार ने भली भांति दर्शाया है और पृष्ठभूमि में आप देखिएगा प्रकृति चित्रण की को करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। नेक्स्ट, प्रोषित पतिका नायिका। यहाँ हम एक कक्ष में स्त्रियों की मंडली देखते हैं। इनमें विरहनी खिन्न भाव से बैठी हुई है। उसकी झुकी हुई मुख मुद्रा उसकी अव्यक्त वेदना प्रकट करती है। परकीया होने के नाते वह इसे व्यक्त भी नहीं कर सकती। चित्रकार ने इस बेबसी को भली भांति प्रकट किया है। परकीया अभिसारिका। यह एक बहुत ही लोकप्रिय चित्र है। चित्र में नायिका को एकदम सुनसान स्थान में उपस्थित किया है। दूर क्षितिज के पास छोटे छोटे वृक्ष हैं। ऊपर लहराए हुए बादल हैं। उन्हें चित्रकार परंपरागत सफेद कपड़े की बंधनवार जैसा दिखलाता है। वहीं सोने की नागिन सी बिजली की चमक है। बादलों से पानी की बूंदें मोतियों की लड़ियों के समान गिर रही हैं। नायिका और सखी तक आते आते वह सहसा रुक जाती हैं। इस चित्र का प्रमुख आकर्षण इसकी ठोस काली पृष्ठभूमि है। चित्रकार ने पुष्ट काले रंगों का प्रयोग किया है, जिसके सम्मुख नायिका समेत अन्य सभी आकृतियां स्वयं प्रकाशित हो जाती हैं। चित्रकार ने नायिका को अपनी धुन में मस्त तेजी से आगे बढ़ते दिखलाया है। ऐसी त्वरा को प्रकट करने के लिए तथा पानी से दामन को बचाने के लिए उसने तनिक सा अपना घाघरा उठा लिया है। इससे उसके स्त्री सौंदर्य को चित्रकार तनिक सा और प्रकाशित करता है। नायिका सखी से कुछ पूछ रही है। संभवतः नायिका पीछे मुड़कर देखती है। पीछे मुड़कर देखने से उसकी एक विशेष भंगिमा उत्पन्न हुई है। नारी भंगिमाएं भारतीय कला को अथ से इति तक संचारित करती आई हैं। फिर उलटकर देखने और आगे बढ़ जाने की त्वरा, जो सामान्य रूप से परस्पर विरोधी गतियां हैं, उन दोनों का ही इस चित्र में बड़ा ही सुंदर संयोग हुआ है। इस प्रकार रसमंजरी श्रृंखला के चित्रों में एक से एक बढ़कर अभिव्यक्तियां हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छी लगी होंगी। तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर संगीता शर्मा जी, आपकी जो है सुंदर प्रस्तुति के लिए। आपने श्रृंगार, सजा, वास्तु, काव्य, जो रासमंजरी जो है रस का समूह में जो विवरण है, उसका जो हमें चित्रण जो मिलता है वसूली की पेंटिंगों में, उसका बहुत सुंदर से आपने उल्लेख किया। और हम यहाँ देखते हैं कि जो रासमंजरी है और जो हम गीत गोविंदा, ये जो दो कृतियां हैं। अब ये दो कृतियों का ये जो कृतियां जो लिखी गई ओडिशा में लिखी गई, ओडिशा से लेकर के यहाँ पहुंच जाती है बिल्कुल हिमालय के गोद में, और यहाँ पर इसका चित्रण होता है। तो ये भी एक अद्भुत है। मतलब कि इस तरह से जो पूरे देश का जो एक चिंतन था, अध्ययन था, वो कहीं एक जगह तक सीमित नहीं था, वो पूरे देश में उसका विस्तार था, पूरे देश में वो प्रवाहमान था। और यहाँ पर जब हम इन चित्रों की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इतिहास में अगर हम जाएंगे, तो ये इतिहास में हमें ये भी जानने की बात है कि ये जो चित्रकला है, चित्रकला का हमें जो है रामायण और महाभारत में भी हमें उल्लेख मिलता है। यहाँ पर पुराणों में उसका उल्लेख है।
विस्तार से उल्लेख है। विष्णुदत्त पुराण में जो है उसमें चित्र बनाने की जो विधियां हैं और किस तरह से रंगों का प्रयोग जो है और किस तरह से जो है जो जो कृति है वो हम जो है उतारते हैं, तो ये सारी चीजें का विस्तार से उल्लेख है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। अब जो हमारे जो नेक्स्ट वक्ता हैं डॉक्टर मोनिका बग्गा जी। डॉक्टर मोनिका बग्गा जी इज़ एन आर्टिस्ट एंड आर्ट हिस्टोरियन. Her field of study has been Tibetan art in Dharamshala. She has been teaching art history and art at graduate and postgraduate level. She has participated in national and international seminars and conferences. Presently, she is based in Chandigarh and she was constantly in touch regarding this painting, School of Paintings of Basuli and sub-schools. And as you know that, all of you know that the Chandigarh Museum is very rich in the paintings as well as the sculptures and other forms of art. Now I request Dr. Monica Bagaji to address us on the Basuli School of Paintings. Very good afternoon to all. It is indeed a pleasure to be here on this platform organized by Mata Vaishno Devi University and Indira Gandhi National Center for Arts. We have already been made well aware of the fine nuances of art of Basoli by Professor Richard Kamboj, and Dr. Sangeeta Sharma has shed considerable light on the Rasmanjari collection. My talk today, yes, is to take you on a brief journey to the world of Mankot painting. Mankot is a small state very adjacent to Basoli, and it is the present-day Ramkot. Now, is the art there an offshoot of Basoli? Is it similar to Basoli? I pause here. Now, my pause here is for a reason, right? Because it is indeed difficult for art to be constrained by either geographical boundaries or by boundaries made by kings and kingdoms. The art and art traditions do outpour and outflow from these boundaries and tend to move to different areas. It could be due to artists migrating. It could be due to the patrons changing, and at the same time, like in this case, a marital alliance between kings and kingdoms. I now move on to the slideshow. My whole presentation is based on slides. I had a pleasure and enjoyed making this presentation, and I hope you all enjoy it as much as I did in the making of it. I start with the Mankot. Now, Mankot is a small state about 25 kilometers by 15 kilometers, lying between Jammu and Kashmir. I'm showing you the map. Ramkot has been colored in Ramkot, which is actually Mankot, has been colored in yellow, while Basoli is being shaded in pink. You can see there's hardly any distance between the two places. Mankot, the style prevalent at Mankot in Jammu district, Jammu and Kashmir, was the closest to Basoli. Now, these Mankot paintings are difficult to distinguish from the Basoli paintings. Why? Because the color scheme and drawings are more or less alike. The inscriptions giving king and prince's names, most often inscribed, are the only ways in which we can help distinguish them. Now, how did this Basoli style move to Mankot? The extension of Basoli style to Mankot was perhaps facilitated by the marriage of Kirpal Singh of Basoli to a Mankot princess. Now, what were the themes of these Mankot paintings? The themes are from the Bhagavad Puran, the Dasavatara, the love stories of Sassi Pannu, Laila Majnu, Baz Bahadur, Rupmati, and the portraits of royal personage and nobles. The style in Mankot has been relaxed by a swifter episodic narration with larger strides and wide-flung arms. The gestural drama is spirited here. I'm showing you a picture of the Government Museum, Chandigarh. This museum has acquired 250 paintings from Kunwar Inder Vijay Singh of the Mankot royal family. It has paintings of different themes, but the slideshow that I'm showing is basically from Bhagavad Puran, and it shows
the life events from the life of Krishna, a few of the love themes, and some portraits, and some rough sketches which the artist have made on the back of the paintings. This is the first painting I would be showing you. Krishna grants a vision of himself as Vishnu to parents before his birth. This is a folio from Bhagavad Puran. The painting size is more or less the same. This time period is the same, so I would not be repeating myself. It was approximately 20 by 30 centimeters. It's circa 1700 AD. Now, this painting depicts the time when Devika and Vasudev are in prison. Vishnu has promised to be born in the womb of Devaki. Vishnu manifests in his divine form. The parents' expression is one of wonder at the sight of the divine form. Both are shown with folded hands in reverence. Krishna shown in infant form of Vishnu Krishna, holding in his four hands the couch, the mace, the chakra, and the lotus. There is a radiating halo around his head. Now, how is the night depicted? The night is depicted by the dark brown background and the lone lamp on the pillar. The bareness of the prison is depicted by the very basic of objects in the chamber, the picture in front and small objects next to the bed. A strong contrast of white bed linen with dark background is shown. The outside setting of a fortress can be seen with crenellations above the prison wall. The two watchmen, a dog next to them on steps, are dozing peacefully, oblivious of the going on inside. The door is ajar. The rain pouring is depicted by pearl strands and red lightning in the far horizon at the top. Vishnu speaks to his parents thus, that he has to be taken to Gokul, for another child has been born to Yashoda, and she be brought to be a substitute, or he will be killed by Kansa. Saying this, he changes his form back to human infant. Losing no time, Vasudev carries him out of the prison. Miracles do happen. The doors open and gatekeeper dozes off, and the watchdogs too. The artist attempts in simplification, but the expression of the parents, the depiction of the time, and the build-up of the atmosphere shows mastery in depiction. He manages to create a drama in the emotion of parents, a feeling of bewilderment, and adoration of the divine infant. He creates through architectural setting, scene of both inside and outside simultaneously. This is the detail of the painting. You can just see it. How beautifully he has made, how the rain has been depicted, how the palace has been depicted, how he depicted both the inside and both. It's narrative at its best. Now Vasudev takes the infant Krishna across Yamuna river. Braving the storm, Vasudev carries the infant Krishna across the river Yamuna and to exchange it with the newborn girl of Yashoda and Nanda in Gokul. It is said that Yamuna was raging, but receded when Vasudev waded through it. To provide protection against the pounding rain, the Sheshnak himself acts like an umbrella to provide shelter to them. A lone tree in stylized form depicts the landscape. The high horizon has red flashes of lightning. The pearl strands, the continuous flow of rain that pounds down. A stream flows diagonally. White silver whirls show the ferocity of the waves. The tiger on the other bank could be the lurking dangers of the night. Or is he there to depict symbolically the vehicle of Devi, goddess, who is to be born in Gokul and who is to be exchanged? The stylized tree has foliage which emanates centrally. The raindrops stop under the curve of the serpent and the canopy. A balance in painting in composition is created by the serpentine curve of the serpent and arched body of the pouncing tiger with its tongue hanging out. There is an attempt at shading to show the tufts of grass and foliage at the river bank. The artist again managed to narrate the tale, depict the setting, and bring about emotion in the brevity of the setting. I move on to the next slide. Now this is again Kansa's
attempt to kill Devki. Devki is shown seated in a chariot, Kansa shown wielding a sword, wearing a lotus crown. She is shown diminutive and looking down, decked with jewelry. The chariots occupy center stage. The horses are shown quietly standing. There is again, when it comes to animal, an attempt at shading of the horses. Bright yellow color is used to depict the wide expanse of the background. The starkness of the landscape contrasts with the detailing of the garment of the main characters, the horses and the chariot. The skyline again is shown blue laced with streaks of white clouds. It's again a high horizon, sloping forehead. You have the wide gaping eyes. The border is red. The inscription is, of course, in Takri. And move on to the next. Vasudev returning with daughter after delivering Krishna to Yashoda and Nanda. The exchange does take place, the rain pouring, the lightning in red streak flashes above the high horizon. All strands depict the incessant rain. Vasudev goes about his mission. There is rejoicing inside the house. The artist here again depicts the night with chocolate brown color. Yashoda is seated on the bed. Here there is patterned bed linen. It is in contrast with the earlier one, which was in the prison, which was a plain black linen. She's feeding the infant Krishna. Nand, shown bearded, is offering grass as rejoicing. Yashoda wears a similar headband worn by Devaki, which is worn by all childbearing mothers in the hills. The lamp here again represents the night. Vasudev is shown leaving the infant girl in his arms. His coat is folded, for he has to wade the river. His face is looking outwards to show that he has left the house of Nanda. Slight foliage is shown to depict the landscape. Here again, the artist depicts the outside as well as the inside as part of the narrative, making use of the architectural setting. This is Nand receiving congratulations on the birth of Krishna. Nand is shown seated. An attendant with fly whisk is behind him. Musicians are there to celebrate. Offering of grass are given by commoners. The backdrop is deep yellow with red border. The attempt in pattern and detailing on the chair or the throne of Nand is there. The musicians are engrossed in creating music for this joyous occasion. The detail, you can have a look as to how the musicians are happy. One is blowing the trumpet. There is one on the kettle drum. There is salutation by a soldier, and the commoners are presenting grass. Move on to the next. Krishna was known for his antics. Krishna the mischievous is here. We have the child Krishna uproots the tree. The Krishna is tied to a large pestle because of his pranks, drags himself to the two trees and pulls hard. The trees come free of inner roots, releasing the two yakshas, Nalakarva and Manigriva. The architecture of the house divides the painting into two. As an aid to narrative, it provides insight to the scene inside as well as the outside. Yashoda is inside, seated on a cushion chonki with a pillow at the back. The walls have niches as decorative elements. The wooden pillars are carved. She listens intently with a hand on the knee and one hand on her chin, pondering as to how to deal with the situation, for a lady has come again, in all probability, narrating the antics of Krishna. While outside, Krishna, in his playfulness, has uprooted the two trees and is shown jubilant in center of the tree, diagonally crossed trees. The foliage of the tree is depicted stylistically. The two tree yakshas with folding hands are facing each other. Giri Govardhan. This is the detail. Lord Krishna, yellow-robed with a lotus crown, is shown central in this vertical painting. He is shown lifting Mount Govardhan on his little finger to provide shelter against the incessant rain. On a green plain backdrop, Krishna is shown surrounded by Balram, Nand, Yashoda, two Gopalas and two cows.
High horizon, typical of this painting, shows dark ink blue gray clouds swelled with rain. They are lined with gold streaks. The rain pours in pearl strands. The mountain in stylized form is shown oblong. Its ridges have tufts of grass and foliage. Lord Krishna has an all-knowing, smiling demure, while the others have a look of both amazement and astonishment at the feat he has accomplished. One of the cow is shown seated, while the other is standing. Shishoda holds on to Nand in fear, while one of the Gopala holds on to the arm of Krishna. This is Krishna and Balram receiving lessons. It is not all play. Studies were also part of his life. The artist again divides the painting composition in two using an architectural setting. The background is yellow. Krishna and Balram are seated on the ground on a carpet, which is patron, under the shade of a drooping tree. The border is again red. Move on to the next. All attempts to kill Krishna by Kans have failed. There are a number of ways in which the evil king Kans tries to kill Krishna. He invites Krishna and Balram to his palace in Mathura for a festival. And on their way, there are a lot of incidents that happen in their life. And they overcome attempts by Kans to kill them. They kill the giant wrestlers Mushtaka and Chanur. They kill the elephant Kuvalpada. They kill the washerman. Finally, with the tusk of that very elephant whose ends are red with his blood, they charge towards Kans, killing them. I would be showing you the slides depicting these events. This is killing of Kans washerman by Krishna. The detail. Inscribed on top border in Takri character is Shri Krishna Kajal Marya and also the number 31 in Takri numerals. Krishna is shown with 5 Gopalas and Balram. The washerman is shown tied and bleeding. The washing stone, vessel for washing, and clothes rolled around next to the river depict him as a washerman. The washerman, a servant of Kans, was arrogant and insulted Krishna, calling them rustic, ill-mannered fools. Krishna killed the man when the washerman threatened to get him arrested by Kans' soldier. Here Krishna distributes the garments between himself, Balram, and the Gopalas. The background is shown stark, devoid of any decoration. No skyline is shown. In the foreground, the river flows, the waves depicted by silver-white curving lines. It is a crowded composition. This is killing of Mushtaka and Charur by Krishna and Balram. The detail. Both the giant wrestlers have fallen to the ground. Krishna and Balram are wielding elephant tusks of the elephant they have overpowered. Balram has the wrestler by the nape of the neck, while Krishna is shown throttling the throat of the wrestler. The wrestler is shown bleeding at his arms and knees, gasping for breath. The artist, to show the gigantic size of the wrestlers, has shown them overlapping the border. His hand is on the border and 1 feet, while the other wrestler's foot does not fit into the border. This painting is full of action. No attempt is made in showing any details. In terms of architecture, foliage, or the skyline, the main focus is to show the drama of the moment. Krishna kills the elephant Kuvalpada. The detail. Set on a plain deep yellow background, here Krishna has overcome the mighty elephant and is atop him while Balram is about to step on it. Both have 1 tusk of the elephant whose end is red pink with fresh blood. The Gopala accompanying them is witness to the scene. The mahant of this elephant have fallen on the ground. Attempt at shading in the elephant is there. We move on to the next slide. Killing of Kans by Krishna. The detail. On a bright yellow plain background, Kans is shown being killed by Krishna, accompanied by Balram. Wearing a lotus crown, Krishna steps forward. With 1 hand, he holds Kans' hair.
and the other wields an elephant tusk. Kans, seated on a throne, is toppled down. His crown has fallen. One of the courtier hides behind the throne, while another, holding the whisk, leans back in fear, while one disheveled courtier has fallen onto the ground. No attempt is there to show the palace or architectural setting. The artist's main focus is to create the action of the scene. It is fully charged. The composition is balanced with Krishna and Balram charging forward, while the other half depicts the fall of Kans. As a last attempt, Kans touches Krishna's feet. After all, now is the time for some celebration. Yes, this is the scene of jubilation. When Kans is killed by Krishna, there is great celebration. The cowherds and musicians gather for this moment of jubilation. The Gopas, on hearing the joyous music, break into a dance. The background is flat and bare. No attempt at decoration or added element of architecture or landscape. To capture the spirit of the moment is important for the artist. Dholi is eyeing the stick and beating the other side with his palm, while the trumpet player with their cheeks swollen by blowing. The kettle twin drum player is immersed to match the beat, while the Shanai player is shown seated in the middle and looking in front, maybe a later thought of addition by the artist. The gaiety is reflected in the colored textured garments of the musicians, the diagonal movement of the Gopas bringing movement to the painting. It can be ascribed to Kansa's jubilation by the number on the folio and the Gopala's presence in the painting. This painting is, I put it because I thought it was a very different attempt by the artist. Raja Teddy Singh worshipping flute playing Krishna. He's got his contemporary patron along with his lord in one painting. How the artist attempts to show the scene of a king worshipping the Krishna. Raja Teddy Singh is shown on the left holding a rosary, mala, wearing yellow choga, not in his royal finery. The left side and central is a crowded composition with trees and birds in flight. The sky with white flecked clouds are shown on high horizon. Balram is shown holding a fly whisk. The gopis and seated cows are in adoration of the Lord, swayed by the melodious music of the flute of their Lord. Krishna is in trance with his feet crossed, playing on his flute, standing on a carved pedestal. The celestial beings have come to pay homage. Flowers are showered on the Lord. As if the whole universe is enraptured, the birds, trees, gopis by the celestial music. In the foreground is a pond or a lake with egrets and lotus shown blooming. This is the detail. You can see how he's made a composition which is crowded, but he manages to get all the elements in one. I really do not know how many of you are aware that there is something known as hierarchical scaling, where the minor subject is shown small. I think the artist would have a confusion as to which is to be made larger, the king or the Lord. So in size, he has made the king to be larger, while he has given the central position to Lord Krishna. Move on to this. This was again a little unusual painting, Sasi Pannu. Both are shown seated on a camel, has tried to show sand dunes. This is a vertical composition. Attempt again when it comes to animal, the artist does try to do a bit of shading. Here the attire is changed, the typical jewelry and bright background is missing. The high horizon with blue sky and white clouds is of course there. Move on to this, again a very different composition, Laila Majnu. I think all of us are aware of this story. It is in the vertical format. The border is damaged. Majnu has gone to the forest and lived in the wilderness and there composes poem for his beloved Laila. You can see both of them seated on a patterned
carpet, and a stylized tree, maybe a weeping willow in the center. I found this very interesting, so I thought I would like to share them. This is at the back of the painting. The artist maybe tried making them, left them, or maybe they were, as most artists, try to make rough sketches before they start the composition. You can see the fine line, the drawing, the mastery strokes by the artist. Again, a rough sketch is again at the back of a painting. Again, rough sketch. I'm trying to attempt a galloping horse. Now these paintings are attributed to Mannkot, but we need some kind of an affirmation as to that these are Mannkot paintings. But these folios in this particular set, there was no opening leaf or colophon. The only way we can attribute them to Mannkot is that they have come out of the family collection of a descendant of the royal house of Mannkot, that is Tikka Inder Vijay Singh, who was settled in Salangri in Kangra district 40 years ago. Another is this particular letter, one Ajab Singh addressed to Raja Mahipat Dev of Mannkot, that a connection to this painting with Mannkot is established. Right? So this letter was a part of one of these paintings, and that's how we attribute these to whole collection to Mannkot. Now, who were the painters? In Indian art, very difficult to know who the artists were. We know them mostly by styles. But who the artists were in the Mughal school, yes, they are named. But in terms of Indian arts of this continent, we do not have named painters. No name is forthcoming. One painting has the name of the sitter, Sabi Mejudi in Takri script and in Devanagari Mejudi. But this is a commoner's name. So in some possibility, we can think he is the master painter, but as Dr. Goswami writes, it is no more than pure speculation. There were some carpenter families which he has managed to attribute them to the base in Haridwar from the records, but no painters can be linked to, painter families can be linked to Mannkot as such. In the end, I have some portraits. I got these, I've just put 3 portraits. I have put them because I wanted to show how the artist has a mastery of what he wants to portray in all his simplicity. This, there is one that I've put of aristocrat, of a king, and there are 2 of courtiers. How the difference in the expression itself shows the rank of the particular person he has painted. This is Hindolpal of Basoli standing, right? This is the detail on a yellow background. Now this is a courtier. You see the expression, the eyes, his bent posture, how it is totally in contrast with the royal figure. This again of a courtier. You can see the wrinkled face, bent person. The overall expression itself tells his rank in society. I end this by saying that Basoli art can be called expressionist in the profound sense where the object has become the ideogram of the subject and most genuine painterly style in the whole of Indian tradition. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Monica Bagaji, for your illustrated lecture on sub-school, offshoot as you call it, of Basoli School of Nature Paintings. You rightly said that art and artistic expressions have not remained confined to certain group geographical areas, and art keep on inspiring and generations to come. The same is true about this Pahadi School of Nature Paintings.
in our in our traditional paintings, as we see in Mankote paintings, showed us the symbolism of art, acts, and expressions has been beautifully depicted, and use of space and colors is brilliant. Thank you once again for your brilliant exposition on this topic. Thanks a lot. We have in our panel today. We have in our panel. We have Shri Kishore Shankar Chawla ji, Shri Anshu Mohan Dogra ji, and Sumant Rawat ji. If you have any query, any question, you are most welcome. Since we have a panel of experts with us, they'll be very happy to answer your questions. Anybody from the group, please. Good evening, sir, ma'am. Good evening. Good evening. सर एक क्वेश्चन था कि नायिका के भेद होते हैं। जी 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 नायिका के भेद होते हैं। हाँ जी हाँ नायिका के भेद होते हैं। जैसे हमने देखा, अभी हमने रसमंजरी के जो हमने फॉलियोस देखे हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स देखे हैं भानुदत्त की, उसमें भानुदत्त ने नायिका को तीन कैटेगरीज में बांटा है। एक तो स्वीया मतलब ओन, एक है अनदर्स दैट इज कॉल्ड परकिया, और दूसरा जो है सामान्य एनीबडीज। और फर्दर जो ये है जैसे स्वेया है वो फिर तीन जो टाइप्स में डिवाइडेड है, एंड देन दे आर फर्दर सब डिवाइडेड। सो यस, क्लासिफिकेशन इज डेफिनेटली देयर, काफी डिटेल। थैंक यू मैम। जी जी, अभी इस वेबिनार के स्कोप में नहीं है वो। Virendra ji, please switch on your mic. I guess your mic is muted. जी जी हाँ, किसी और के पास कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कृपा करके आप पूछ सकते हैं। Good evening. My name is Harpreet Singh. I've got just two queries. We've seen the Basholi School of Art, and I just want to ask, like you're talking about Nayika and other roles, is there any parallelism between what is seen in Khajuraho in the sculptures and some of the Basholi art that we've seen? This is my first question. Secondly, are there any modern people who have tried to bring in abstract work in Basholi and this kind of an art? That's all. बेसिक डिफरेंस जो बसोली और खजुराहो की जो हम देखते हैं काम में, वो ये है कि यहाँ जो रसमंजरी सीरीज जो आप देख रहे हैं, जो नायिका का डिपिक्शन आपने देखा, उसमें कहीं एरोटिक सीन्स एज सच नहीं है। दे आर रोमांटिक डेफिनेटली, बट नॉट एरोटिक। दैट इज आई थिंक द बेसिक डिफरेंस। हालांकि वहां उसके पीछे भी खजुराहो में कोई कंसेप्ट है जो इससे अलग हटके है, मे बी profane worldly life, something like that, or you know, लेकिन अगर हम बहुत स्पष्ट रूप से बात करें तो इस तरीके का कोई एरोटिसिज्म हमें यहाँ रसमंजरी में नहीं दिखता। और कोई प्रश्न? एंड एक जो क्वेश्चन था कि आजकल जो लोग बसोली आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर दे इंट्रोड्यूसिंग एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इनटू दिस वर्क? बसोली में पर्टिकुलरली बहुत कितने आर्टिस्ट, हाँ हमें ये पता है कि बहुत सारे हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जो मिनिएचर स्टाइल में वर्क कर रहे हैं, एंड दे हैव देयर ओन क्रिएटिव स्टाइल। एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहूंगी, यस डेफिनेटली। जैसे आप जानते हैं कि ये शैल चोयल जी हैं उदयपुर के, तो उनका भी जो वर्क है वो is inspired by our Indian miniature paintings. I will not say Basoli, but हाँ, of course, Indian miniature paintings inspired है, और ऐसे कई कलाकार और भी हैं. Not exactly abstract, but yes, you can say that it which incorporates our traditional miniature style elements, as well as it is, you can say, modern in the sense कि मतलब वो बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं है, and he's working on a huge canvas surfaces. So this is what, and there are many, like आज हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे हमारे साथ अभी अंशु मोहन जी भी हैं, वो भी हमारा मिनिएचर पेंटिंग काफी सुंदर करते हैं, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं,
और लेकिन ऑफ कोर्स मैं नहीं कहूँगी, मैंने जितना उनका काम देखा है, मॉडर्न तो नहीं उसको हम उस सेंस में कहेंगे, ऑफ कोर्स ही इज क्रिएटिव एंड ही इज डूइंग हिज ओरिजिनल वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इस ट्रेडिशन को, ऐसे कलाकार जो हैं हमें मतलब उनको बहुत मैं बधाई देती हूँ कि वो इस ट्रेडिशन को जिंदा रखे हुए हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है या जो मिनिएचर स्टाइल है पेंटिंग्स का, उसमें अब क्योंकि मेहनत बहुत है, तो आज इसमें काम करने वाले लोगों की कमी है। और मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगी समांता जी को, मिस्टर समांता शर्मा जी को, जिनका ये एक आइडिया लेके आए हैं कि यहाँ पे आप एक बसोली स्कूल जो आप कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए आप स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आई रियली अप्रिशिएट दैट आइडिया, because in fact we need to encourage and we should make efforts for the development of this जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है, इसको बचाने का हमें कोशिश करना है। और हमें अपने यंग जनरेशन को हमें एनकरेज करने की जरूरत है कि जो इस स्टाइल में काम करें और इसको आगे लेके जाएं। इसमें क्रिएटिव वर्क का भी स्कोप है, ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडिशनल वर्क कर रहे हैं तो हम उसमें क्रिएटिव नहीं हो सकते, हम ओरिजिनल वर्क नहीं कर सकते, उसका एक बहुत बड़ा स्कोप है। एंड वी हैव, हमारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट फील्ड के कई कलाकार जिन्होंने ऐसा किया है। एंड जहां तक आप मॉडर्न एलिमेंट्स की बात करेंगे, यस, बहुत सारे हमारे ऐसे भी कलाकार हैं एब्स्ट्रैक्ट, जो आप कह रहे थे कि कंटेम्प्रेरी उसमें फील्ड में भी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने टोटली मतलब एब्स्ट्रैक्ट काम किया है, बट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड द एलिमेंट्स, मतलब मिनिएचर पेंटिंग में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशन है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ माउंटेन्स जो वो डिपिक्ट करते हैं अपने कॉम्पोजिशंस में, उसमें वो एलिमेंट्स को उन्होंने यूज किया है। ऐसे कलाकार हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि कोई कलाकार नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट में भी है। एंड देन वी हैव जो जैसे हमारे अंशु मोहन जी आज हमारे बीच, बार बार नाम ले रही हूँ क्योंकि हमारे बीच साक्षात उपस्थित हैं, इस तरीके के भी कलाकार हैं डेफिनेटली। थैंक यू। लेकिन मैम एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि हेलो जी जी बताइएगा। हाँ, देखिए कंटेम्प्रेरी आर्ट में पुराना मिनिएचर्स पेंटिंग को यूज करना ये तो हर वक्त मतलब नहीं हो सकता ना, क्योंकि कहीं पे ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो अपना काम भी कर सकते हैं। अब जो सिचुएशन अभी जो चल रहा है वो लेकर भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें मिनिएचर पेंटिंग्स जो है वो काफी डेकोरेटिव होते हैं, काफी सुंदर होते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है ये सिचुएशन कभी मतलब ऐसा सुंदर तो दिखता नहीं है, तो फिर उसको कैसे करें? नहीं, आई एग्री विद यू सर। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि हम सबको ही और जितने कलाकार हैं उनको मिनिएचर स्टाइल में ही वर्क करना शुरू कर देना चाहिए, मेरा कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। जो लोग एब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये देखिए आर्ट जो है हमारी इंटरनल अर्ज होती है, हमारा आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। तो ये कोई जब ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल बना दे कि हमको यही बनाना है, बट वी कैन एनकरेज, देयर आर मेनी आर्टिस्ट और यंग आर्टिस्ट हु आर टैलेंटेड इनफ एंड और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, करते हैं। इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। तो ऐसे बहुत कलाकार हैं जो बहुत अच्छा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट भी करते होंगे, बहुत अच्छा रियलिस्टिक काम भी करते हैं, एंड देन दे आर वेरी क्रिएटिव एंड दे हैव देयर ओन मॉडर्न कंटेम्प्रेरी स्टाइल। अब जैसे हम जे स्वामीनाथन जी की बात करें तो उनके वर्क को अगर हम स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसके काम में भी हमें जो अपने मिनिएचर वर्क है उससे भी उसका इंस्पिरेशन उनके वर्क में देखने को मिलता है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आर्टिस्ट सारे लोग मिनिएचर करें या मिनिएचर करना ही सही है, पर हाँ मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि मेरे भी संज्ञान में बीइंग पार्ट ऑफ लाइक दिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ललित कला, तो कई चीजें हमारे भी संज्ञान में आती हैं और एक चर्चा में हमारे भी संज्ञान में ये बात है, क्योंकि वी आर हैविंग मेनी कल्चरल परफॉर्मेंसेस इन अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज, कई देशों में हमारे यहाँ से परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बहुत प्रमोट होते हैं। बट व्हेन वी कम टू विजुअल आर्ट्स, बहुत कम एग्जीबिशंस हमारी जा रही थी, तो वी हैड अ क्वेरी, सो देयर वाज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर ICCR, और उनका यही कहना था कि बात वही आती है कि जब हम विदेश जाते हैं और हमारा जब कोई वहाँ शो, अगर हम आर्टिस्ट, तो फिर वही बात आती है कि इंडियननेस क्या है, इट्स ऑलरेडी देयर, वो लोग तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं।
तो उनके वर्क और जो विदेशों में हमारा वर्क जा रहा है उसमें, और जब हम इंडिया से जाते हैं तो हमारा क्या फर्क आता है, तो वो चीज भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक डिस्कशन का एक विषय है। हमारी तरफ से नहीं है, इवन बाहर जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी होता है। इसीलिए जो हमारा जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस हैं उनको ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब था, मतलब ये कि इट्स लाइक गुड कि वी आर डूइंग एब्स्ट्रैक्ट, but we have many contemporary Indian artists who have been doing abstract, and they were inspired by, or they incorporated elements of miniature painting. So I just wanted to say that, but I हाँ मैम, आप एकदम ठीक बात कर रहे हैं कि लगे कि हमारा जो इंडियन आर्ट जो है वो लगे कि वो इंडियनाइज्ड हो, बेसिकली बात हाँ, कुछ तो हो पहचान अपना। ऐसा केशव मलिक जी का भी एक मैंने एक आर्टिकल बहुत पहले कभी कोट किया था, और आज से काफी साल पुराना है, वो कहीं अखबार में छपा था। उसमें भी उनका यही एक कहना था कि इंडियननेस जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए, वो हमें रिटेन करने की आवश्यकता है, जो हम अपनी मिट्टी में जुड़े रहें। मेरे कहने का ये मतलब नहीं, लेकिन मैम मैं ये कह रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस एक्सप्रेशन जो अपने माइंड पे होगा, जो सोच रहे हैं कि मतलब क्या देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो लेके उसने कुछ किया है। लेकिन वो ऐसे काफी आर्टिस्ट है जो इंडियननेस को दिखाता है। इंडियननेस का मतलब ये नहीं है कि घाघरा चोली पहन के घूम रहे हैं ऐसे। No, you are mistaken. I would like to interrupt. I'm very sorry to say. आप फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, प्लीज गो थ्रू द पेंटिंग्स ऑफ जे स्वामीनाथन, और बहुत सारे और भी लोग हैं। यू गो थ्रू द वर्क ऑफ शैल चोएल जी। ऐसा कोई नहीं है कि घाघरा चोली पहन के दिखाएंगे तो इंडियननेस होगा, इट्स रॉन्ग। We are talking about elements, तत्व होते हैं जो हमारे, that is what is said, and art is basically your expression of self, what you feel, so nothing can be forced, whether it is style or कैसे रेगुलर जी रहे हैं, यही तो है ना बेसिकली चीज है। नोटबंदी हो गया, ये हो गया, हाँ, वही दिखाइए जो आपको महसूस होता है। कलाकार तो देखिए, आप अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कला में। कला art cannot be forced and art cannot be taught, it can only be refined. So this is what I mean to say. धन्यवाद। बोलिए सर। ये जो श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं, इसमें जो हमारी जो पारंपरिक कला है हमारे इस पूरे हिमालय क्षेत्र में, इसमें हम हर सत्र में नई जो हमारे स्कूल हैं, हम सब स्कूल से उन पर चर्चा करेंगे, और आप सबका स्वागत है उसमें, और आप अपने विचार रखिए उसमें। और अगर आप इसमें जो है कोई शोध पत्र पढ़ना चाहेंगे, उसके बारे में आप हमें अवगत कराएं, हमें बहुत खुशी होगी कि आपको शामिल करने में। और ये जो प्रयास होने चाहिए कि जो है कला दृष्टि से हम सामने रखें। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो हमारी जो एक परंपरा है, जो हमारी पहचान है, तो हम उसको भी न भूलें, वो भी हम साथ लेकर चलें। हजार सालों से चल रहा है, लेकिन हम अगर छोड़ देंगे तो हम अपने इस उद्देश्य में हम सफल होंगे जो हम चल रहे हैं। कला के सारे माध्यम है और भी हो सकते हैं जो अभी सामने नहीं भी आए हैं। तो एक कला प्रवाह है, धारा प्रवाह है, चलता रहेगा, बहता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने कहीं पदछाप छोड़ जाता है, कहीं ना कहीं अपने इंप्रेशन छोड़ जाता है। तो हम एक जो छाप थी वो हम बसोली की हमने देखी, हमने उस पर हमने चर्चा करी। अब हम आगे बढ़ेंगे कांगड़ा की ओर, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो और भी जो हम जम्मू क्षेत्र को हम देखेंगे, यहाँ पर बसोली, मनकोट, जसरोटा, फिर जम्मू एक अपने में भी एक स्कूल था, जम्मू स्कूल। फिर हम कष्टवार में भी हम देखते हैं कि वहां पर भी एक शैली उभर कर आई, वहां पर राजौरी और पुंछ भी है, यहाँ पर भी शैली उभर कर आई। तो इसको भी हम ये जो विकसित हुए, ये जो स्कूल्स और सब स्कूल्स हुए हैं, तो इन पर भी चर्चा हम करेंगे आगे। और जो है इससे नई चीजें सामने आएगी, जो ये कला के जो हमारे जो अनमोल जो रत्न हैं
वो हम सबके सामने रखेंगे। जम्मू के जो ये अनमोल रत्न है, ये पूरी जो है देश को पता चले कि यहाँ की जो धरोहर है, जो इस रूप में जो है, वो उस पर और भी गहन अध्ययन हो। और इस पर जो है बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं कि इनको रिवाइव करने की, इन स्कूल्स की रिवाइव करने की वही बात हो रही है। तो वो भी बहुत ही एक अच्छी पहल है, जो भी जहाँ भी जो हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबका, आज के जो वक्ताओं का, जिन्होंने विस्तार से इस पर रोशनी डाली है। प्रोफेसर ऋचा कंबोज, जिन्होंने विस्तार से इस पर जो अपना व्याख्यान दिया और हमको इसकी बारीकियों से हमें अवगत कराया। डॉक्टर संगीता शर्मा जी ने, जिन्होंने जो है ये जो ग्रंथ पर जो आधारित जो ये चित्रण हुआ, तो उसका जो उल्लेख किया। और इसमें यहाँ पर जो बातें सामने आई है कि एक तो जो है, एक जो कलाकार जो है, कला तो उसको है ही है, उसके साथ साथ जो एक संस्कृत और संस्कृति का ज्ञान जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस देश की जो सांस्कृतिक धाराओं से जुड़ना चाहेंगे तो संस्कृत और संस्कृति ये बहुत आवश्यक है। जो हमने इन पेंटिंगों में देखी, पेंटिंगों में जो चित्रण हुआ है, उसमें जो है उनको संस्कृत का ज्ञान अवश्य रहा होगा, और उसके साथ साथ संस्कृति का भी। और यहाँ पर एक और जो विषय जो आया सामने, वो है लिपि का। लिपि भी एक वो ऐतिहासिक चीज है। यहाँ पर हम इन जो पेंटिंग्स में, जो मनकोट और जो बसोली की पेंटिंग में जो है, हम जो है वी सी दिस स्क्रिप्ट विच इज नॉट बीइंग यूज्ड नाउ। ये जो स्क्रिप्ट है, वो जो टाकरी स्क्रिप्ट है, ये यहाँ की पहचान है जम्मू की। इसको रिवाइव करने की आवश्यकता है। जिस तरह से बाकी जो स्क्रिप्ट्स हैं जो वैनिश हो रहे हैं, उनको रिवाइव की बात हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिटरेचर है। लॉट ऑफ लिटरेचर इज इन दीज स्क्रिप्ट्स। वी हैव लॉट ऑफ inscriptions and stone which are available not only in Jammu but in the neighboring parts of Jammu. In Himachal there are a lot of scripts which are in Takri, and also a lot of manuscripts also in Takri. And today we have seen that on paintings also, the descriptions, the titles, they're also in Takri. So this also need to be revived, this sort of learning, the script learning. And also the Sharda, a lot of things have been taking place, lot of activities are related to Sharda revival that is taking place. And so very, very important discussions was held today, and we hope that we'll continue this series and we'll get support from all of you. And now I hand over the proceedings to Dr. Sumanta ji. Dr. Sumanta ji. Thank you, Dr. Bangru. In fact, it was a pleasure listening to all the eminent speakers today, as well as the discussants, because it is always very interesting as well as intriguing if there are certain people who can discuss and bring upon those issues which are very, very important, and especially of this stature, because जैसे मैंने जब हमने when I started understanding about the miniature painting, so I was told about Basoli paintings. So in fact, in our university, we also have a hostel named Basoli, so it was known to me, right? So I could relate. But now, as today, when I was listening to Dr. Monica ji, so I got to know that how there is not much of difference, but still Mankot is different from Basoli, and what are the integral parts of that, and how beautifully those things are shown. So these kind of discourses or these kind of discussions are so damn important, because without this we do not know about the heritage of our own nation, of our own state, and of our own existence, right? Because we come to know about ourselves from somebody else, and that makes a lot of confusions and stuff like that. So it was really an amazing session. In fact, I enjoyed it a lot, though we were having some internet problems, but somehow we managed, and we cope up with that, and it was really amazing to host you all. So formally, I will like to thank all the speakers, Professor Richa Kamboj, Dr. Sangeeta Sharma, as well as Dr. Monica Baka, for taking out some time and presenting such amazing things, which at least for me was very, very new, and it was not known to me at all, though I wrote a proposal for having a center at our university, and we did some groundwork at that point of time. But
but the way you people presented it was so beautiful and so amazing, and also something which was enhancing the amount of information which we had for this corpus, and we will definitely like to incorporate those things as well. So thank you so much, ma'ams. And I will also like to thank the discussants as well as the people who came in between, Ms. Suman Rawat ji, Mr. Harpreet Singh Saab, as well as Mr. Rana Mitra ji, who came out with very amazing questions as well as important issues which were raised, and then I guess so Professor Richa has answered them. And it is requested that whenever we are having a webinar or something like that, so the person who is speaking can keep his or her mic on, and the rest of the people should keep it on the mute mode. Not many of us know usually that it is important to keep the video on and the mic off, because if the mic is on, then there are a lot of disturbances, and especially when we are recording it, so it comes out a little bit in a problematic way. But that's not a problem, because we will still manage it. But it was an interesting and amazing discussion, and I could see that if we not only present but also give some, and this is my request to Dr. Virendra Bangru ji as well, that from now onwards, whenever we are holding any conference or webinar, we should always have a panel of discussants who can come up and discuss the issues, because then it becomes more meaningful, right? So formally, I will also like to thank the university administration, especially our Vice Chancellor, Professor Dr. R.K. Sinha, Padma Shri, who has been instrumental in pushing us to organize such kind of webinars, as well as Shri Nagendra Singh Jamwal Sahab, who is the registrar of the university and has taken a lot of interest in the state's, I will say, culture and heritage, and he wants to put that on a very high platform, I will say. So with that support, we are organizing lots and lots of webinars as well as seminars and conferences. I do not know how we will fare in next few days, or else we were planning to host a lot of seminars and conferences in the offline mode as well. But right now, as we can see, that the situation is getting, a little bit problematic, and we are listening to a lot of apprehensions which are coming up. So you never know what will happen tomorrow. But if things go right, though definitely we will be holding a lot of conferences and seminars on these and related topics in our university, and you all will be invited over. If you have any problems and this and that, we will also like to take care of that. Please do come over, and we will be hosting you for seminars and conferences which we are planning to hold next year. That will be from January 2022. So thank you once again for the beautiful presentations, as well as some very good discussions, and I hope to host you as well as see you all again in near future. Thank you so much.